हेलो व्यूअर्स, वेबिनार आपके सामने है। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर स्टीफन स्ट्यू। सो मिस्टर स्टीफन, say greetings. Okay, greetings to all customers here to the webinar. So we are talking today about the other part 66, what is the meaning of that and what will be the future in aviation. So if you have any question, you can tell the question to us. So and we hope we can clarify it in Urdu and English. थैंक यू। सबसे पहले मैं मिस्टर स्टीफन स्टू का इंट्रोडक्शन कराता चलूँ। एक EASA 147 ऑर्गेनाइजेशन एयरटेक बिल्डिंग, उसके ये CEO हैं और जो हॉक एविएशन सर्विसेज के साथ कोलैबोरेटेड है। तो आज हम अपना वेबिनार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 मिनट का वक्फा लेंगे ये देखने के लिए कि हमारी वीडियो और ऑडियो सबको सही सुनाई दे रही है या नहीं। तो प्लीज कमेंट में बता दें कि सबको वीडियो और ऑडियो सही आ रही है। So we start. Stephen, tell us about EASA Part 66. So the other part 66 has 2 parts. One is for the customer and one is for the authority. So the other part 66 is the regulation about knowledge, experience, and how to get a license. That's written down in the other part 66 in 2 parts and all regulated in annexes. Okay, so tell me about the benefits of undergraduate student of this training course. So if we have a basic training course, so there will be the reduction from 5 years experience to 2 years experience for the Cat B1 or B2, and for the Cat A license holder will be from 3 years to 1 year experience will be reduced. Also inside is the type training courses, and also the new regulations about small aircrafts, large aircrafts, and we have nowadays more maintenance repair organization. But this I will clarify after translation. इन्होंने ये बताया है कि EASA पार्ट 66 के 2 पार्ट्स हैं, जिसके अंदर लाइसेंसिंग है और उसके अंदर एक्सपीरियंस और बेसिक नॉलेज जो उसकी मेन रिक्वायरमेंट है। जो कि नॉलेज को अगर आप देखें तो कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, वो मॉड्यूल्स पढ़ाए जाते हैं, और एक्सपीरियंस जो है वो कैटेगरी वाइज लाइसेंस के डिफरेंट होता है। So yes. So please. Now we can go ahead. What is inside? So we have now in the other part 66, the aviation legislation, we have now also inside the maintenance repair organizations. So we have 2. So we have part M and part 145. Now we have also inside part ML, maintenance of light aircraft. Part M stands for maintenance. And 145 is for large aircraft, A1 aircraft, and part ML is for light aircraft, like ELA, European Light Aircraft number 2. Then we have also inside the CAMO nowadays, that means Continuation Airworthiness Management Organization. So they are connected to the 145 organizations. And if we have a non-AOC aircraft, then we have KO, Continuation Airworthiness Organization. So they can also take over. And therefore you need the experience in accordance to our knowledge, in accordance to the other processes. Thank you. इन्होंने अभी जो मैं बताया, मैं एक समराइज ट्रांसलेशन आपके साथ करता रहूँगा इनके आंसर्स की। इन्होंने जो बताया वो ये कि मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर 145 ऑर्गेनाइजेशन है और पार्ट M है। पार्ट M के साथ न्यू रेगुलेशंस में है पार्ट ML। पार्ट ML जो है वो लाइट एयरक्राफ्ट के लिए है और 145 लार्ज एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के लिए है। इसके साथ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैमो ऑर्गेनाइजेशन, और अगर नॉन AOC लिस्टेड एयरक्राफ्ट हैं तो उसके लिए काओ ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर EASA के अंदर मौजूद है। So what kind of knowledge I need for such kind of different companies or maintenance repair organization?
that is written down very clearly in certain modules. Inside, from mathematics or the complete aircraft to engine to propeller, what kind of knowledge the person need to join aviation. इन्होंने कहा कि पार्ट 145 एक मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो है सर्टिफाइंग स्टाफ होते हैं, जिसे B1 B2 सर्टिफाइंग स्टाफ होते हैं फॉर एयरक्राफ्ट, एंड कैटेगरी ए जो होता है वो सिंपल डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन करता है. तो स्टीफन, टेल अस अबाउट some experience requirement also for this license. So for the license, so we have a difference between category A and category B. So category B, A is certificate, is a licensed aircraft maintenance mechanic. Okay. So he has only full examination. He needs 3 years experience to get his license, and if he is joining a basic training course, is 1 year. And if you will be a skilled worker, but skilled worker is here in Pakistan not so available. Yes. So we can forget skilled worker in Pakistan, so have only full examination or basic training. Basic training. Yeah? And from category B, the licensed aircraft maintenance engineer, there you have minimum 5 years experience for full examination only, and this basic training course will be reduced to 2 years. ओके, तो इन्होंने कुछ लाइसेंस के एक्सपीरियंस के हवाले से बताया है. कैटेगरी ए लाइसेंस के लिए इन केस आप 147 के अंदर पढ़े हैं तो उसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है. अगर आप कैटेगरी ए लाइसेंस ही के लिए आप बेसिक ट्रेनिंग आपने की है तो ओनली 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है. कैटेगरी बी लाइसेंस के अंदर अगर हम चले हैं तो कैटेगरी बी लाइसेंस जो है वो सर्टिफाइंग स्टाफ के पास होता है जो अपने एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करता है. और कैटेगरी बी लाइसेंस में इन केस आपने 147 ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ा है तो वो लाइसेंस का एक्सपीरियंस 3 साल होगा. और अगर आपने कैटेगरी B1 लाइसेंस लेना है या B2 लाइसेंस लेना है और आपने किसी 147 ऑर्गेनाइजेशन से नहीं पढ़ा तो उसका एक्सपीरियंस 5 साल होगा. So NEASA Part 6 wrote down very clearly that the candidate must have knowledge about the laws, what is involved. Then he must minimum 18 years old to get a license. 18 years is minimum, and everyone can do that. Everyone, a cooker, a professional, or an airliner, all they can join. It's very clear written down. Everyone can join NEASA Part 66. इन्होंने फर्दर और ऐड किया है कि इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट, कोर्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि स्टूडेंट को लॉस के बारे में पता हो और 18 इयर्स ओल्ड वो हो. एविएशन के लॉस के बारे में एविएशन लेजिस्लेशन से ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं हो सकती. एविएशन लेजिस्लेशन ही एविएशन की लॉ है और इसकी रिक्वायरमेंट बेसिकली कुछ भी नहीं है, कोई भी कर सकता है. यही ये कह रहे थे कि एयरलाइनर हो वो भी ऐसा ले सकता है, नया स्टूडेंट भी ऐसा ले सकता है, कोई भी प्रोफेशनल ये लाइसेंस की तरफ जा सकता है. So first of all, the candidate must have knowledge. So how he can use the knowledge. So he can make self-study, then full examination of all modules, or he will join a basic training course and get the knowledge inside there. After that, we need evidence. And evidence means that we need an examination. This examination must be passed with 75% minimum over each module. थैंक यू. नॉलेज रिक्वायरमेंट के बारे में बात की थी. नॉलेज रिक्वायरमेंट किस तरह हासिल कर सकते हैं? सेल्फ स्टडी करके EASA के मॉड्यूल्स को आपने पास करना है या फिर बेसिक ट्रेनिंग कोर्स करें किसी भी 147 अप्रूव ऑर्गेनाइजेशन से, और उस कोर्स के बिहाफ पे आपको एविडेंस चाहिए होता है जो कि एग्जामिनेशन के थ्रू मिलता है. एग्जामिनेशन जो है वो शुड बी 75% पासिंग मार्क्स उसके होते हैं, तो 75% पासिंग मार्क्स हर एग्जाम में होने चाहिए. ये एक रिक्वायरमेंट है नॉलेज की. After the evidence that he passed all modules with 75%, then he needs experience.
So experience normally is done, he must be employed by a national approved maintenance repair organization, by an approved M organization for maintenance, by an approved 145 organization for large aircrafts, by an approved KO, Continuation Airworthiness, Combined Airworthiness Organization. No? And this experience he has to gain, as I told you before, 5 years, that will be now 2 years, and 1 year for mechanic. जैसे इन्होंने पहले बताया है कि 5 साल 3 साल या 1 साल का रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस कहाँ होना चाहिए? किसी भी नेशनल अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। किसी अनअप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस कभी भी काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान सिविल एविएशन से अप्रूव्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सरीन एयर, एयर सियाल, पीआईए, यहाँ सबका एक्सपीरियंस जो है वो काउंट होगा। PIA, Serene Air Sial is approved from PCA. Then their experience would be counted. Right, must be. Okay. So Pakistani experience is accepted for EASA. Correct. If organization is approved from NAA, National Aviation Authority. Correct. Yes. तो ये भी क्लियर हो गया कि पाकिस्तानियों के लिए कुछ लोग सवाल करते हैं कि क्या ये एक्सपीरियंस पाकिस्तानियों का काउंट होगा या नहीं होगा। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है वो ऑर्गेनाइजेशन 145 अप्रूव्ड हो पाकिस्तान सिविल एविएशन से, तो ये एक्सपीरियंस काउंट होगा। So Stephen, why one should choose EASA over others? What is the basically worth of EASA? So first, to understand this question, we have to look on the world. So we have North, Middle, South America, and Pacific. In these areas is the Federal Aviation Authority of America taken over. So we need their AMP license or AME license. So if you look to the EASA regulations, then you can work with an EASA Part 66 license in Europe, Africa, Asia. And nowadays also accepted as a differential training in Australia. So one is missing, that is New Zealand. New Zealand, we need CASA license. That means you need an Australian license. Okay. बात ये थी कि पाकिस्तान ये EASA लाइसेंस क्यों लिया जाए, वर्थ ऑफ EASA लाइसेंस क्या है। तो इन्होंने ये बताया है कि अगर हम अमेरिका की बात करें, नॉर्थ या साउथ अमेरिका, वहाँ पर लाइसेंस जो है वो ANP लाइसेंस यूज होता है। EASA पार्ट 66 ओवरऑल यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया में इस वक्त मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो उसके कुछ रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, लेकिन EASA लाइसेंस वहाँ पे भी कन्वर्टेबल है। तो ओके। And one thing more. So for Pakistan itself, if you have an EASA Part 66 license, then you can work for the stations of one of the airlines like Emirates and Turkish Airlines, because they can only accept EASA Part 66 license holder to make release to service to such kind of aircraft, because they are working under EASA regulation. So a Pakistani guy cannot work with a national Pakistan Civil Aviation Authority license on this aircraft. It's forbidden. Okay. तो एक और कंफ्यूजन जो थी वो इस मामले में वो ये थी कि जिस जगह पर या जिस कंट्री में EASA नहीं है वहाँ पे EASA लाइसेंस होल्डर काम कर सकता है या नहीं। अगर वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन EASA 145 अप्रूव है तो वहाँ पे EASA लाइसेंस होल्डर काम कर सकता है, चाहे वो अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं पे भी हो या मिडिल ईस्ट में क्यों ना हो। तो अगर EASA 145 अप्रूव ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर EASA लाइसेंस होल्डर काम करेगा। So I mean to say that if EASA 145 is available in America, so he and she can work in America also with EASA license. So for this example, it's a good idea. Yes. In Brasilia will be nowadays 120 145 organizations, and they hand over the Atlantic or Pacific flights, because to have an outstation for an airline is very expensive. So they can make an additional job.
what also is happening in Pakistan in Islamabad. So, Stephen, if an organization is in America, Yes. so they have to do for with FAA also, or only they can choose EASA and go with them? No, they cannot. So for American, you need an AMA, AMP license, or It's mandatory. it's mandatory. So it's A and B in mandatory, then EASA. Not really. So that shows they need only Module 9, Module 10. Then they can work with the AMP license, but you must be an American citizen. Okay. Must have a post box in America. Then you can work on European aircraft. Okay. Let's change some scenario. We go to Middle East, and there is an organization EASA 145 approved. So we can work there with the EASA license. Yes. Okay. We don't need GCA. No. We don't need GCA. No. ओके सो अगर यहाँ का EASA लाइसेंस होल्डर स्टूडेंट मिडिल ईस्ट में जाकर EASA 145 में काम करता है तो उस स्टूडेंट को GCA लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। EASA लाइसेंस की जरूरत है, EASA लाइसेंस की बेसिस पे वो काम करेगा क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के पास EASA 145 यानी कि मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल मौजूद है। ओके So when benefits of this license for non-EU personnel. So if you have as a non-EU personnel an aircraft license when it comes to EASA regulations, then you can work worldwide, as I told you, except New Zealand. So the benefit of the license is that you will be Cat A. He is only for simple tasks and scheduled tasks. So the B1 licensed engineer will be shift leader, line maintenance manager, base maintenance manager, and maintenance manager. So that is sort of the highest what you can get. And if you have a C license holder, so C license holder is a heavy maintenance. He take care about the C checks and make release of service to the complete aircraft. Okay. So here is your highest career, the C license engineer for the operator. That means if the operator wants to buy a new aircraft from the production organization, the C license engineer is looking for the systems of the aircraft, and the management pilot is looking how the aircraft is flying. So both together work as a team. So for example, if an aircraft has $400 million, so I know one C license engineer has green flag, yellow flag, red flag. Red flag mast, so guarantee, so this aircraft must be completely new, the system must be new. Yellow means we can discuss. And green is okay. And the management pilot looks how the aircraft is flying. Is it safe for flight, how soft flight, hard flight, etc. So then both of them say, okay, so the production organization needs $400 million. We start with 300. And then they discuss 1 day or 2 days, and then they can join like in the Pakistani bazaar. So where's the price now? Yes. They start bargaining also. Correct. So इनके बताने का एक बड़ी डिटेल में इन्होंने बात बताई, वो ये थी कि EASA लाइसेंस की वर्क वर्ल्ड वाइड है एक्सेप्ट न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड में कासा लाइसेंस की ज़रूरत होती है। कासा लाइसेंस ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस को कहते हैं। तो एक्सेप्ट न्यूजीलैंड जो है वो आप EASA लाइसेंस दुनिया भर में काम कर सकते हैं। तो कैटेगरी ए लाइसेंस की बात करी इन्होंने, जो लाइन मेंटेनेंस के टास्क करता है, और फिर कैटेगरी बी लाइन मेंटेनेंस के एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करता है और बेस मेंटेनेंस के एयरक्राफ्ट में सपोर्ट स्टाफ काम करता है। कैटेगरी सी जो लाइसेंस होल्डर होता है वो बेस मेंटेनेंस के एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करता है। तो यही एग्जांपल दी गई थी कि अगर किसी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन से जहाज लेते हैं, बाय करते हैं, तो वहाँ पे कैटेगरी सी इंजीनियर का जो है वो रोल होता है, और वो रोल मुझे इन्होंने बयान किया। ओके, हम व्यूअर्स से कहेंगे कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन है मिस्टर स्टीफन से, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं
तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जो है वो क्वेश्चन करें. Yes. Right? So if a personnel have a degree in some sort of engineering, so how can they shift to this course or this aviation industry? Okay, so any skilled worker or any diploma in Pakistan, he can join to the other Part 66 regulations, as we just talked about it, and have only to pass the exams. The evidence must be there. He will get his experience, and then he will get the license. So there's no restrictions. Everyone can do it. And my school was a cooker, and he's now B1 is now station manager of an outstation. Wow. Yeah? Wow. So that can be also a career from cooker to a station manager. Children, we have a question. How much percentage of ATA chapter required to apply for category A license? Good question. Yes. So more than 50% of the ATA chapters must be covered, More than 50%. and for the B1 license holder need 1,100 hours minimum experience, or for the Cat A license you need 800 hours. 50% of ATA chapters आपके complete होने चाहिए. ये question था सईद मोहम्मद हमजा की तरफ से. Another question है जिब्रान की तरफ से. What are the requirement for applying category A license from Germany? Okay, that is a little bit complex because the German authority is very strict. So you have, normally it's written down in the law, you need the Form 19 to apply for the license. So, good. So you need now in Germany Form 19.1, that is your personal data and record, what you have. That means passport copy, place of birth, security pass, police certificate must be there, all the certificates of the other part of the 7th school where you do the exam, the evidence for that. You need then we have 19K. 19K means that is your experience, the evidence with your logbook, where you have covered the 1,100 hours. And in Germany, very, very important, only in Germany, you must undertake the mandatory tasks. So that means that you have experience on the fuselage, aerodynamic wind, hydraulic power, electrical light, landing gear, and engine. So for the Cat A is only removal installation. That's it. But for B1 licensed engineer, he has to do removal installation, function operation test, and troubleshooting. And that makes it very, very strict. And on the other side, you need a German guy who is your attorney in Germany, because the German authority will only talk to him. Yeah? So that's what I'm doing also. I have my some students want to have the license, so they go over my head and join the civil aviation authority. So काफ़ी अच्छा आंसर इसका मिला है हमें. वैसे नॉर्मली अगर हम EASA लाइसेंस के अप्लाई करते हैं तो उसके लिए फॉर्म 19 की ज़रूरत होती है. लेकिन अगर हम जर्मनी से अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट है फॉर्म 19.1, जिसके अंदर आपका बेसिक डाटा होता है, पासपोर्ट और आपकी ये पुलिस सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ों की कॉपीज होती हैं. उसके बाद 19K एक फॉर्म है जिसके अंदर आपका एक्सपीरियंस लॉगबुक होता है. एक्सपीरियंस लॉगबुक वैसी नहीं होती जैसे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी NAAs में होती है. फॉर जर्मन अथॉरिटी मैंडेटरी टास्क आपको करने होंगे, जिसके अंदर फ्यूजलाज, विंग, हाइड्रोलिक सिस्टम, लैंडिंग गियर्स और इंजन्स पे वो टास्क हुए हुए हों. वो मैंडेटरी टास्क हैं फॉर कैटेगरी A लाइसेंस. अगर B1 की बात करें तो रिमूवल इंस्टॉलेशन की भी हो, फंक्शनल ऑपरेशंस, ट्रबल शूटिंग, ये सब की भी हो. इसके साथ साथ आपको एक जर्मन गाय चाहिए, जर्मन बंदा चाहिए आपको अपने लाइसेंस के लिए. जो अटॉर्नी होता है, जर्मन अथॉरिटी उस जर्मन बंदे से ही बात करती है आपके लाइसेंस के लिए, और वो बेसिकली he will be the bridge between you and LBA. Oh, it's a foreigner. So non-national Germans can apply. They have to apply over the attorney. That is me in this case. Okay. So Stephen will also help us for this German attorney.
आगे, when you are coming to conduct exam in Kenya. What do I want to do in Kenya? Lovely country. Lions on the street. Thank you. इनका आंसर था कि कीनिया में बिल्कुल आना चाहूँगा, बहुत अच्छा कंट्री है, वहाँ पे लॉयंस जो है वो स्ट्रीट पे घूम रहे होते हैं. I'm not sure. Stephen, Mr. Hadi is saying hello to you. Nice to meet you on live program. Thank you. Hadi, hey. You see, Yes, you our fly Iranian- over my atomic now. Yes, our Iranian friend. So, another question: is it necessary to be a German or European national for applying license for category A? Can non-national can apply? As we talk about it, Yes. one, हमने इसका आंसर पहले ही दे दिया है. अगर जर्मन टॉर्नी आपके पास होगा तो आप जो है वो जर्मन ही कहलाएंगे. इन शॉर्ट यही इसका आंसर है. और कोई क्वेश्चन आप लोग करना चाहें मीनवाइल तो आप कर सकते हैं. Stephen, let's talk about some potential of aviation in Pakistan. So how can you see the 145 potential in Pakistan? Maintenance organizations in Pakistan are growing, and they are starting their work here. More and more airlines are coming. that's 3 more. Yes, 3 more and more in also in pipeline. So how can you see future of aviation in Pakistan? So for Pakistan, the new 3 airlines, so we need more technicals. And also, if you look to the future, with flying taxis in Pakistan, I don't know if it will happening, but help us in the traffic outside. Inshallah. Inshallah. So, aviation is growing more and more and more. Now after COVID, we can see it that we come back to normal state. So 2023, 2024, we will reach 2019 before COVID, the same situation. In aviation, normally it goes continually up. So we passed now a very, very strong winter scenario in aviation. Okay. इन्होंने ये बताया कि अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में 3 नई एयरलाइंस हैं जो लॉन्च हुई हैं. आगे भी और एयरलाइंस आ रही हैं. तो जाहिर है जब एयरलाइंस आ रही हैं तो एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं. एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं तो उसके लिए टेक्नीशियंस की नीड भी होगी. उसके बाद बात करें आउटसाइड पाकिस्तान, फ्लाइंग टैक्सीज जो है अब इन्वॉल्व हो गई हैं फ्यूचर में. फ्लाइंग टैक्सीज, एमिरेट्स भी फ्लाइंग टैक्सीज पे जो है वो काम कर रहा है, और इसी तरह से लाइट एयरक्राफ्ट की तरफ भी मूवमेंट हो रही है इन फ्यूचर. कोविड के बाद जो है वो इस तरह की सिचुएशन काफ़ी इंक्रीज हुई है इन सॉर्ट ऑफ टेक्नीशियन, बिकॉज कोविड में जो है वो एविएशन जो है वो रुक गई थी. वी कैन से एविएशन विल बी वाज स्टेशनरी कंडीशन इन कोविड, बट आफ्टर कोविड जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता कोविड ख़त्म हुआ, एविएशन को भी ग्रो अप मिलने लगा. तो 2023 और 24 के अंदर एविएशन उस स्टेज पे होगी जिस स्टेज पे 2019 के अंदर थी. तो उसके बाद जो ग्रोथ होनी थी 2020 के अंदर जो कोविड की वजह से नहीं हुई, एंड देन 2021 के अंदर वो अब 24 के बाद होगी. तो इसी ग्रोथ को देखते हुए अगर हम देखें तो आज का स्टूडेंट अगर इस तरह के कोर्स में आता है और ये आशा की तरफ मूव होता है तो उसको 24-25 के अंदर अपनी ग्रोथ नजर आना शुरू हो जाएगी. So one of the students asked me about, is it true that there will be in future circular runways? Yes, it is true. The circular runways will be for the flying taxis. Normally for the normal aircraft, for the normal runways, now it's what we have now. There's no change. Yes. But it is correct, it will be in future circular runways, but they are only for the flying taxis, because they are going like helicopter inside. No need for runway. Yes. And taxiing an aircraft. इनका ये कहना था कि इन फ्यूचर एक स्टूडेंट ने ये पूछा था कि क्या सर्कुलर रनवे जो है वो फ्यूचर में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा. तो इनका आंसर था यस, सर्कुलर रनवेज भी इन फ्यूचर में होंगे. वो फ्लाइंग टैक्सीज के लिए ही होंगे,
बिकॉज फ्लाइंग टैक्सीज को जो है वो रन अप की ज़रूरत नहीं है, दे कैन फ्लाई लाइक हेलीकॉप्टर्स एंड उसी तरह से ये लैंड भी करेंगे। तो इन फ्यूचर सर्कुलर रनवेज फ्लाइंग टैक्सीज के लिए यूज़ किए जाएंगे, एयरक्राफ्ट के लिए यही सिमिलर रनवे होंगे, ये चेंज नहीं होंगे। सो we have potential in Pakistan aviation also, and outside Pakistan so many potential for EASA. We will go after 3 days to Dubai also for examination purpose. So how can you see the growth in UAE market? Because in Pakistan or in Asian countries, everyone want to go to Middle East to earn more money. Huh? Yes, very moment. Yes. And then they want to go in Europe. So how can you see the growth of aviation in UAE? So let me just explain something. We have the center of gravity in aviation, the center of aviation. And the center of aviation is now in Pakistan. So that means that if in the beginning, as the American market was going up, so that was the highest standard. Then came in the middle Europe, and then came Asia. Now the bananas changed. So now we have Asia on top place, Europe is in the middle, and America is getting down. So that's the reason that the FAA license lose their priority in the market. Also in the Pacific area, many countries looking now for EASA approval. No, so that's the reason also in Papua New Guinea. No? Yes. इनके बताने का मकसद ये था कि इन द पास्ट ये होता था कि अमेरिकन मार्केट जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, और देन यूरोप की मार्केट थी, और उसके बाद एशियन मार्केट को देखा जाता था एविएशन में। जिस तरह की एविएशन की ग्रोथ एशियन कंट्रीज में हुई है, उसके बाद अब राइट नाउ एशियन मार्केट सबसे ज़्यादा ऊपर है। तो ये एशियन मार्केट में मिडिल ईस्ट भी आ जाता है और साउथ ईस्ट एशिया भी इंक्लूड होता है। So the answer is no. Europe is not so interesting. Interesting is Middle East and Asian market. There's the future. Yeah? इन्होंने कहा कि इंटरेस्टिंग ये है कि अब यूरोप उतना एविएशन के लिए मार्केट नहीं रहा जितना मिडिल ईस्ट और एशियन मार्केट हो गई है ड्यू टू मोस्ट ट्रेवलिंग। तो मिडिल ईस्ट में हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं यूएई की और सऊदी अरब की, क्योंकि ज़्यादातर ट्रैवलिंग वहीं पे होती है, और उसके उसी वजह से वहाँ पे एविएशन की मार्केट भी आगे बढ़ती जा रही है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की हैं जो यूएई में स्टार्ट हो रही हैं फॉर एविएशन, एमआरओज एंड एयरलाइंस ऑल्सो। और कोई सवाल आप लोगों की तरफ से हो तो प्लीज कीजिए। Look now on the airport list. Ranked 1 to 10, 8 is Chinese airports. Okay. Not like in the past Atlanta, America. That is a symbol how it works in future. इन्होंने कहा है कि अगर आप एयरपोर्ट्स की लिस्ट देखें तो उसमें पहले कुछ अमेरिकन एयरपोर्ट्स आते थे, अब टॉप 10 में से 8 एयरपोर्ट्स चाइनीज एयरपोर्ट्स हैं। तो वर्ल्ड इज चेंजिंग फ्रॉम देयर टू हियर, एंड मार्केट जो है वो अमेरिका की तरफ से चाइनीज की तरफ ज़्यादा आ रही है। तो ज़्यादातर आजकल भी यही बात चल रही है कि कौन सा नया ब्लॉक है। To make it more clearly, in 2034 is the center of aviation in India. That can see where the future for you is. Okay. 2024 में ये प्रेडिक्शन इस तरह की है कि सेंटर ऑफ एविएशन, मतलब एविएशन का जो सेंटर है वो इंडिया मोस्टली हो सकता है, और एशियन, देखें इंडिया है तो इसका मतलब एशिया में सबसे बड़ा जो है वो चाइना के बाद इंडिया आता है। मोस्ट स्किल मैन पावर जो है वो हम एशियंस के पास ही होती है। तो इनका कहना था कि सेंटर ऑफ एविएशन जो है वो इंडिया हो सकता है 2034 के अंदर। तो विद इन 10 ईयर्स जो है वो काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है एविएशन के अंदर, एशियन एविएशन के अंदर खास तौर पे। सो स्टीफन, हाउ व्हाई new graduate entering this course, why he or she both? We have made no differences. Yes, we don't. He and she, so Yeah. down there very clearly. He and she. Why she choose this course from
us, me and you. That's the reason, because outside in aviation, you need a license. Without license, you have no chance to get a job offer. If you pass all modules, you get an offer for maintenance mechanic. Yeah? But if you have a license in your hand, the world is open for you. So you can join everywhere worldwide where you can get a job offer. Now we have Emirates above 100 will be hired nowadays. Etihad is hiring. Qatar is coming up, is hiring. So Singapore is starting now again. So in Singapore alone will be around about 50 145 organizations. 50. Malaysia also. Not so much. Not so much. Not so much. Okay. तो ये बताने का मकसद ये था इनका कि एशियन मार्केट्स में इतना बूम आ गया है कि अब यूएई और सिंगापुर भी हायरिंग की तरफ जा रही हैं, कतर एयरवेज भी हायरिंग कर रहा है और इत्तेहाद वगैरह ये सब हायरिंग की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि जो एयरलाइनर्स हैं उनको ज़ाहिर है पता होगा, बहुत से एयरलाइनर्स की अभी जॉब भी एमिरेट्स की तरफ लगी है, तो उनको भी ये आइडिया होगा कि एशियन मार्केट अब कितनी ऊपर जा रही है। सिर्फ सिंगापुर के अंदर 50 मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो सिंगापुर जो है वो तकरीबन कराची जितना है, लेकिन उसके अंदर 50 ऑर्गेनाइजेशन है मेंटेनेंस रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो जाहिर है पोटेंशियल है एशियन मार्केट्स में और इस तरह से काम हो रहा है। सो स्टीफन, some words for Hawk Aviation, please. Hawk Aviation, good. Hawk is good equipped, campus is nice, and so it is in accordance to with the other Part 66. Now, slowly established over years now. Yes. So maybe we can go ahead to the next step. And the knowledge is there, the lecturers are young, the lecturers are fresh. They give students modern knowledge, not old-fashioned knowledge. That's very important. I can see it in India especially. The old navigation guys make old knowledge. That is not here in Hawks Aviation. Yes. Only fresh B1 license holder, fresh B2 license holder who train the students. So they got the experience also inside to the training. थोड़ी सी तारीफ हुई है हमारी, वो ये कि इन्होंने कहा है कि हॉक एविएशन जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसा पार्ट 66 को फॉलो करती है, इन्हीं की बुक्स को फॉलो किया जाता है यहाँ पर। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इन्होंने की कि यहाँ पर फ्रेश B1 इंजीनियर जो है वो इंस्ट्रक्टर्स हैं। दूसरे मुल्कों में या दूसरी जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे ओल्ड नेविगेटर्स को इसने टीच कराते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फ्रेश B1 इंस्ट्रक्टर होते हैं। इसी वजह से जो है वो ये हमारी तारीफ भी कर रहे हैं। Podcast is down. आ रहा है? It's okay? Yeah, no, it's good. Okay. So tell me about Hawk Aviation is giving experience in two, basically duration wise and task oriented also. So for ASSL 2 years and for Serene year 1 year, minimum or maximum. So it is okay. It is acceptable to NAAs for इन्होंने बताया कि कैटेगरी ए लाइसेंस के लिए जो हम एक्सपीरियंस करवा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, और अगर हम कैटेगरी B1 की तरफ जाते हैं तो यहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग वगैरह अगर ऐड हो जाए तो उसकी तरफ एक्सेप्टेबिलिटी रेट है, लेकिन हम B1 की बात ही नहीं करते, हम A की बात करते हैं, पहली सीढ़ी की बात करते हैं। बेसिकली कैटेगरी A इज फर्स्ट स्टेप फॉर लाइसेंस होल्डर। If we directly jump to B1, so it will be disaster. It will be complex, yes. It will be a little bit complex, yes. So that's why we go for category A. So for category A, our experience is acceptable and okay. Yes. So we go with Hawk in future together with the Cat A category, but the exams will be B1. So that means you can get after 1 year your Cat A license. You have a license, and with the license you can join anywhere in the world.
Also, if you want, you can convert it to Civil Aviation Authority Pakistan Okay. license. So, but the benefit is you need only 2 years more experience, and without any new examinations, you can get now the B1 license as well. And you are working in an airline, so the airline has to provide you a type training. So now you have a B1 license, a type rating entry, and in Pakistan you need only 2 type ratings. काफ़ी अच्छा एलेबोरेट किया है। बताने का मकसद ये था कि हम जो यहाँ पे एग्ज़ाम कराते हैं यासा पार्ट 66 के, वो B1.1 के एग्ज़ाम्स होते हैं। एक्सपीरियंस जो है उसकी रिक्वायरमेंट कैटेगरी ए की होती है। इसका फ़ायदा ये है कि कैटेगरी ए लाइसेंस की तरफ पहला कदम आसानी से उठा लिया जाता है। पेपर जो एग्ज़ाम्स पास होते हैं वो कैटेगरी B1 के होते हैं। इसके बाद इसका फ़ायदा ये है कि कैटेगरी ए लाइसेंस लेने के बाद अगर आप कैटेगरी B1 की तरफ मूव करते हैं तो आपको सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आपको नए पेपर देने की कोई ज़रूरत नहीं। वी डोंट नीड टू गिव अनदर एग्जाम्स फॉर B1 कैटेगरी। सो वी हैव B1 कैटेगरी एग्जाम्स एंड our student go for category A license first, then after experience they can get B1 also on behalf of these exams, right? So now we are ending. Say some words for this webinar, how you feel it. Well, the new law is a little bit complex, so the new law is coming up, new content will be inside. Train yourself. If you're a beginner, make English sure. That will coming also in future. Yeah? And also the 147 schools will be totally renewed. So it comes up in 2 years, 3 years. इन्होंने कहा है कि न्यू रेगुलेशंस जो आ रही हैं उस पे जो है वो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी इंग्लिश को काफ़ी बेहतर करें और उसके बाद जो है नई रेगुलेशन में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन 147 इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे साथ जो जुड़ी हुई है। So I will perhaps talk about one final word. Okay. So we have the module 11A, B, and C. So now the 11A covered B and C. Yes. So some of to make money only in Pakistan say to the student, no, it's not accepted. Careful, it's wrong. And that now in future is no more B, no more C. Only module 11. Okay. There's no more difference like now, so this cheaters in the market cannot earn additional money. Be careful with it. If you make a 11A, what we do with AUX, it is fully accepted for B and C. कुछ मॉड्यूल 11 के बारे में बताया गया है कि मॉड्यूल 11 जो है उसमें मॉड्यूल 11A, B और C होता है। A जो होता है वो B और C को कवर कर रहा होता है। इनकेस आपने मॉड्यूल 11A पास कर लिया है तो वो B और C को भी कवर करेगा। कुछ लोग मार्केट में ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि B और C आपको अलग से देना पड़ेगा अगर आपने A किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है। तो इनका कहने का मकसद ये था कि ऐसे स्कैमर्स से जो है वो आप लोग बच के रहें और अपनी मार्केट को इस तरह से जज करें और इसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछते रहने चाहिए लोगों से ताकि अवेयरनेस और बढ़ती रहे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं होने की वजह से ही इस तरह के स्कैम्स में लोग फंसते हैं। So thank you so much, Mr. Stephen, for your time with us, and thank you so much viewers जो हमारे साथ जुड़े रहे, जिन्होंने क्वेश्चंस किया उनको भी बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमारे वेबिनार अटेंड करें और जो भी क्यूरीज हैं उसके लिए वो हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह।